Good morning, students. Now today we'll learn a new story. Okay. Chapter number 2: A Mad Tea Party. Alice started walking and soon come upon a most odd-looking house. This was the March Hare's house. He was having tea with his friend, the Mad Hatter, and the Dormouse. Look at here. This is the picture of tea party. She is Alice. It is March Hare. It is Dormouse and is Mad Hatter. Alice, one day she walking and came to the very odd looking house. Okay, the table was a large one, but the three were all crowded together at one corner of it. टेबल बहुत ही लार्ज था, लेकिन तीनों एक कॉर्नर पे क्राउडेड हो गए थे. Who? Mad Hatter, Dormouse and Hare. Okay. No room, no room, they cried when they saw Alice coming. There is plenty of room, said Alice angrily, and she sat down in a large armchair at one end of the table. So, वो क्या कर रहे थे? फाइटिंग. रूम नहीं है, रूम नहीं है. एलिस बहुत ही गुस्से में आ गई और वो शाउटिंग किया कि देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम, बहुत सारे रूम है, और वो एक चेयर पर बैठ गई. It wasn't very civil of you to sit down without being invited, said the March Hare. March Hare ने क्या कहा? Civil means mannerly. कोई मैनर नहीं, ये कोई मैनर नहीं है कि आप ऐसे ही विदाउट इनवाइट आप आओ और बैठ जाओ. I didn't know it was your table, said Alice. It is late for a great many more than 3. मुझे नहीं पता था ये आपका है. ये आप 3 से जो भी ग्रेट है उसके लिए है. After a few attempts of conversation, Alice began to feel she was not welcome. Then the Hatter took out a large watch. He shook it and said, "What day of the month is it?" Turning to Alice, Alice said, "The 4th." थोड़ी बातचीत करने के बाद एलिस को लगा कि यहाँ मेरा कुछ वेलकम नहीं हुआ है. देन आफ्टर सम टाइम हैटर जो है उसने वॉच निकाली और उसने एलिस से पूछा विच मंथ इज इट. तो एलिस ने आंसर दिया द 4th. 2 days wrong, sighed the Hatter. I told you butter wouldn't suit the wax, he said, looking angrily at the March Hare. March Hare ने क्या कहा? I told you butter wouldn't suit the wax. जो बटर है वो वर्क को कुछ सूट नहीं कर रहा है. Okay? It was the best butter, replied the Hare. वो बेस्ट बटर था. And he took the watch and dipped it into his cup of tea. उसने क्या किया? अपनी वॉच लेके जो कप ऑफ टी थी उसमें डिप किया. एलिस हैड बीन लुकिंग ओवर हिज शोल्डर विथ सम इंटरेस्ट. एलिस उसके शोल्डर को सम इंटरेस्ट से देख रही थी. व्हाट अ फनी वॉच, शी रिमार्क. इट टेल्स द डे ऑफ द मंथ एंड डजंट टेल व्हाट टाइम इट इज. उसने क्या सोचा कि ये कैसी वॉच है जो मंथ बताती है लेकिन टाइम नहीं बताती. Every time Alice said something, she got funny answer. जब जब एलिस कुछ पूछती थी तो उसको कुछ फनी आंसर मिलता था. This is a mad tea party. Alice thought at last, I will never come here again, and she got up and walked away. एलिस ने सोचा मैं यहाँ पे अब कभी नहीं आऊँगी और वो चली गई. So look at here. Did you come to know how they may have a tea party? Okay, they have very funny questions and very funny answers. Okay, thank you.